गर्भवती सब गर्भवती के जे वैष्णवित काम से सुन दै छै आ जे साँटके ओकरा एकपटै निकालेका अंडा दै छै जसको चाहिँ सिजर गर्नुपर्ने त्यस्ता महिलाहरूको पनि डेलिभरी हुन सक्ने व्यवस्था हामी गरेका छौँ। लगभग 15-20 आदमी छ। च्यालेन्ज जेमा पनि च्यालेन्ज हुन्छ नि हैन, सबै अब गर्दागर्दै त तपाईहरुको चाहिँ मडलले यति च्यालेन्जिङ हुँदाहुँदै त सिओएनसी सञ्चालन गरे। जिनेस बोर्डले के भन्दाखेरि टिभी क्षयरोग जुन छ नि एमडिआर टिभी छ कि छैन भनेर कन्फर्म गर्ने र सिराहाको मिर्चिया नगरपालिकाद्वारा भए गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक विकास, सामाजिक विकास लगायतको गतिविधिहरूलाई समेटेर तयार पारिएको मिर्चिया नगरपालिका विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम प्रत्येक बुधबार साँझ 8:30 बजे र पुनः प्रसारण बिहीबार बिहान 8:30 बजे फरक विषय र शीर्षकमा प्रसारण हुँदै आएको छ। यस सप्ताह स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेको छ। मिर्चैया नगरमा एउटा मिर्चैया अस्पताल, 7वटा हेल्थ पोस्ट, 4वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र एउटा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रबाट सेवा सुविधा प्रवाह भइरहेको छ। मिर्चैया नगरपालिकाले आफ्नै स्रोत साधनबाट 25 बेडको मिर्चैया अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। मिर्चैया नगर स्वास्थ्य संयोजक सुरेश कुमार सिंह। मिर्चैया नगरपालिकामा एकटा मिर्चैया अस्पताल छ, 7 हेल्थ पोस्ट छ, 4टा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र है, एकटा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र है, जहाँ सेवा प्रवाह कर रहे हैं। में मिर्चैया अस्पताल से ऐसे करीब प्राथमिक स्वास्थ्य मिर्चैया मिर्चैया अपन साधन स्रोत से 25 बेड के अस्पताल में पड़े 70-79 तक में बजट नहीं आया, 79-80 में केंद्रीय बजट अस्पताल आए। दोनों पालिका के अपना निजी स्रोत से अस्पताल चलना बहुत महत्व। एठाम पहले यहाँ के नॉर्मल डिलीवरी मात्रे हो अपनी यहाँ के ऑपरेशनों प्रविधि द्वारा प्रसूति करने की व्यवस्था हम मिर्चैया नगरपालिका यहाँ के मिर्चैया अस्पताल में करे थे। और जब साधन स्रोत से मिर्चैया नगरपालिका अपना बजट से अपना शोषित हुआ। अब 7 गो हेल्थ पोस्ट है, सब हेल्थ पोस्ट में भवन से एक और हेल्थ पोस्ट है मलहनिया हेल्थ पोस्ट, ओकरा हम सब यहाँ के मिर्चैया अस्पताल में फिर मलहनिया अस्पताल के घोषणा हुई है। 18 करोड़ के बजट चल से बजट का भवन का टेंडर बनल से आ भवन बन के बाद रोड का अस्पताल होते एक आधार पर मिर्चैया नगरपालिका यहाँ दूटा अस्पताल आ 4टा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र है। 4टा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र में 3टा आधारभूत के भवन बन रहा है, एकटा आधारभूत मात्र यहाँ के भवन नहीं बन रहा है, एक शहरी क्लिनिक है सैकड़ों भवन है। तो मिर्चैया में 13टा स्वास्थ्य संस्था मध्य 2टा मात्र यहाँ स्वास्थ्य संस्था है तेरा भवन है और सब अपने भवन में काम कर रहे हैं। नेपाल सरकार से हेल्थ पोस्ट से आधारभूत स्वास्थ्य से जतेक सुविधा प्राप्त हो सब सुविधा मिर्चैया नगरपालिका से प्राप्त। कौन यहाँ सुविधा नहीं है मिर्चैया नगरपालिका से प्राप्त। एक एमडीआर टीबी के हो टीबी इंटरनेट रहे लगे यहाँ सब सेंटर एक खुले आ खूब कार्यक्रम खोपो कार्यक्रम को सब सेंटर मिर्चैया नगरपालिका।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा बाहेक थपमा मिर्चया नगरपालिकाले नियमित सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ। फेरि पनि स्वास्थ्य संयोजक सिंह आके मिर्चया नगरपालिका में संघीय सरकार प्रत्येक कार्यक्रम में सब कार्यक्रम थप में यहाँ के हम सब कुछ संघीय सरकार से गर्भवती के लागि आयरन चक्की मात्रै दर एगुना जो मात्रै दर लेकिन मिर्चया नगरपालिका में एक विशेष अनुदान कार्यक्रम से योजना आयोगको कार्यक्रम से जते गर्भवती सब गर्भवती के जो वैष्णव काम से सुन जे साकते एक पटे कार्यक्रम अंडा दे एकर अलावा मिर्चया नगरपालिका जते गर्भवती सबके कैल्शियम चक्की यहाँ के संघीय सरकार के सेवा से अलग सेवा। अब मिर्चया नगरपालिका मिर्चया अस्पताल अपना आर्थिक स्रोत से चलेली है। उसके अलावा यहाँ के 70 लाख रुपया दै छै। कोई 70 लाख रुपया से हम सब विभिन्न जेना 18 लाख रुपया के मात्र दवाई आबै छै केंद्र सरकार से। थप दवाई हम सब उसे किनै छी, थप सेवा सुविधा उसे दै छी। मतलब जे का अभाव है खर्च का अभाव है खर्च का अभाव पूरा करै छै। जे अभाव भेले हम सब उसे पूरा करै छी। केंद्र सरकार यहाँ के स्वास्थ्य संस्था में कासा नहीं देने चाहिए। मिर्चया नगरपालिका अपना साधन स्रोत से प्रत्येक संस्था में कासा के सहयोग करे। मतलब संघ के कार्यक्रम से अलगे कार्यक्रम द्वारा सरकारी संघ में नहीं बढ़ा मिर्चया अस्पताल मिर्चया नगरपालिका मिर्चया अस्पताल से विशेष सेवा द्वारा वीडियो एक्सरे फोटो काम मिर्चया अस्पताल में मिर्चया नगरपालिका का वीडियो से वो सेवा चालू है। आगे एक्सरे सेवा छोट मोट पीएससी में कोनो पालिका में एक्सरे सेवा नहीं है। सिराहा लहान बाहेक सरकारी एक्सरे सेवा नहीं है। वो सेवा मिर्चया नगरपालिका के अस्पताल में बढ़ रहा है। प्रसूति सेवा की बात कहबे करी सिराहा जिला में जमा 4 ठाम सिराहा अस्पताल लहान अस्पताल आ फुलकुमारी जरा सीओसी सेंटर कहै से मात्र चलते। अलावा मिर्चया नगरपालिका अपना साधन स्रोत से सीओसी सेंटर चलावे छै। सीओसी सेंटर मतलब है कि बच्चा के जे बच्चा नॉर्मल नहीं होते ओकरा ऑपरेशन करके बच्चा हो तो सीओसी सेंटर में छै। ओकरा हम सब वहाँ के रिफर नहीं करब। कोनो गर्भवती के आदमी है गर्भवती के बच्चा हो दे हम सब रिफर नहीं कर वो ने 2% जे सीरियस हो जेते एकरा मात्र हम सब रिफर कर सब सेवा सब से दौड़ल छै। आपने जे कहले सरकारी अस्पताल पर लोग के धागा नहीं छै। यहाँ के पुराना कहावत है। अपने जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में मिर्चया अस्पताल में जेबे तो अपने हाथ से महसूस करबी कि जनता कते भीड़ सेवा कराए कते भीड़ बीमो लागू है। कोई वैसा अहाँ अपने प्रत्यक्ष देखबे तो अपने बुझेबे कि प्राइवेट में की सेवा है और सरकारी अस्पताल में की सेवा है प्रत्यक्ष अवलोकन कर सकते। नेपाल के कोनो पालिका में महानगर पालिका उप महानगरपालिका छोड़कर कोनो एहन पालिका में जो सेवा दै सब सेवा मिर्चया नगरपालिका दऽ रहल छै। ओहि दुआरे हम बहुत संतुष्ट छियै। एकटा संतुष्टि की छै कि बजट के अभाव आयल छै। पालिका ला कुछ बजट सीमित है जते हम सम्मान कर चुके नहीं दऽ सकै छै आ केंद्रों में नहीं दऽ रहल छै। तथापि हमर मिर्चया नगरपालिका के नगर प्रमुख छथिन जे उचित जरूरी वाला चीज है ओहिमे कहियो पछाड़ी नहीं हटै छै कहियो पूरा कऽ दै छै। ओहिसँ हमसब विश्वास छै कि हम सब जे चीज कहै छै नगर प्रमुख पूरा कऽ दै छै उचित व्यवस्था भए छै। वही द्वारे नगर स्वास्थ्य के विकास हो रहा है और पालिका की अपेक्षा मिर्चया नगरपालिका में बहुत स्वास्थ्य सेवा भऽ रहल है। मुख्य भविष्य समस्या बहुते हुए है लेकिन हमसे समस्या के चीज भार करे मेयर साहब के सलाह अनुसार मतलब भवन चाहे सब काम कर मतलब व्यवस्था भऽ रहल है। टेंडरो लागल है रहले। अगर मिर्चया नगरपालिका से टोटल बजट के 10% स्वास्थ्य सेवा में देथिन और उत्तम हो जेते। लेकिन नवरोज प्रमुख के बहुतो समस्या सब है। स्वास्थ्य से बेसी समस्या और सब शिक्षा है सड़क बाट है सब में लग जाए छै। हम अनुरोध करै 10% के बजट देते हम और निम्न व्यवस्था कर सकते। मिर्चया नगरपालिका नगरवासीको लागि मिर्चया नगरपालिका सधैँ तथाचित भएर लागिरहेको छ र स्वास्थ्य जनसुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ।
मिर्चिया नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बरध्वज आङदाम्बे। मिर्चिया नगरपालिकाका नगरवासीहरूको जनस्वास्थ्य सुधारको लागि नगरपालिका सधैँ के छ भन्दाखेरि तत्त्वचित्त भएर लागिरहेको छ। त्यही सन्दर्भमा अब हाम्रो 12 वडामा स्वास्थ्य केन्द्र छन् र एउटा चाहिँ हामीले भर्खरै प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्रलाई निजी अस्पतालमा 25 बेडको अस्पतालमा चाहिँ गरिएको छ र यसमा अब स्वास्थ्य सुधारको लागि भनेर चाहिँ हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तो पौष्टिक खानाका खाद्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ र बेला बेलामा के छ भन्दाखेरि चाहिँ खोपहरू सञ्चालन गरेका छौँ र अब खास गरेर जस्तो के त भन्दाखेरि महिलाहरू प्रसुतिको लागि महिलाहरू योभन्दा अगाडि चाहिँ यो अपरेसन हुने खासै अपरेसन हुने महिलाहरू चाहिँ बाहिर जानुपर्थ्यो, यो नगरपालिका बाहिर जानुपर्थ्यो। अहिले हामीले भर्खरदेखि चाहिँ यो शल्यक्रियासहितको प्रसुति सेवा हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब गर्भवती महिलाहरूलाई जो अलिकति चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर छ त्यस वर्गका जनसमुदायहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ सहज पुर्याएको छ। साथै कुनै के कस्तो गर्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो मिर्चिया अस्पतालमा सुत्केरी भएका कुनै पनि सुत्केरीहरूले चाहिँ निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाहरू घरसम्म प्रेरण पनि गरेका छन्। यसले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूको गर्भवती भएका महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सेवा प्राप्त गर्नुभएको छ र सहज भएको मैले अनुभूति गरेको छु। र यसको साथसाथै अब मिर्चिया अस्पतालमा हामीले के त भन्दाखेरि पहिले यो भिडियो एक्सरे पनि थिएन, अहिले सबै व्यवस्था गरेका छौँ र चाहिँ भिडियो एक्सरे पुरा हामी व्यवस्था गरेका छौँ र यसरी क्रमशः त्यस सेवालाई हामी स्मृति गर्दैछौँ। मिर्चिया नगरपालिकामा नमुना कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। मिर्चिया नगरपालिकाका सबै गर्भवती महिलाहरूको लागि विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत अन्डा, स्याउ, फलफुल दिने कार्यक्रम ल्याएका छौँ। अब अहिले हामीले एउटा नमुना कार्यक्रममा चाहिँ हामीले एउटा आम चाहिँ यो नगरमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा चाहिँ पौष्टिक चाहिँ आहार कार्यक्रम छ। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ हामी स्याउ, अन्डा लगायत अरू पौष्टिक वस्तु जस्तो के भन्दाखेरि गेडागुडीहरू हामी बाँड्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। त्यो निरन्तर छ, एउटा राम्रो हो। अर्को मैले भर्खरै भने हाम्रो मिर्चिया चाहिँ प्रथम स्वास्थ्य केन्द्रलाई मिर्चिया अस्पतालको रूपमा गरेपछि मिर्चिया अस्पतालमा अहिले हामी यो के अरे के भन्छ त्यो गाइनोकोलोजिस्ट विशेषज्ञ सहितको चाहिँ डक्टर व्यवस्था गरेका छौँ ताकि कुनै पनि के त भन्दा खास गरेर महिलाहरूले गर्भवती महिलाहरूको सेवा सुधार गरेको छ र चाहिँ गर्भवती महिलाहरू जो चाहिँ नर्मल डेलिभरी हुन नसक्ने जसको चाहिँ सिजर गर्नुपर्ने त्यस्ता महिलाहरूको पनि डेलिभरी हुन सक्ने व्यवस्था हामी गरेका छौँ। मिर्चिया स्वास्थ्य केन्द्रलाई अपग्रेड गर्दै मिर्चिया अस्पतालमा परिणत भएको छ। मिर्चिया अस्पतालले विशेष कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। फेरि पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आङदाम्बे। त्यो अनुसार धेरै महिलाहरूले त्यो सेवा लिइसक्नु भएको छ र त्यो सेवा प्राप्त गर्ने महिलाहरूलाई हामीले निःशुल्क एम्बुलेन्सद्वारा घरमै पुर्याउने व्यवस्था गरेका छौँ। यसको साथसाथै हाम्रो मिर्चिया अस्पतालमा चाहिँ यो के भन्दाखेरि भन्यो भने भिडियो एक्सरेको छ चाहिँ व्यवस्था पनि हामी गरेका छौँ। अर्को डिजिटल एक्सरेको व्यवस्था हामी गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि क्रमशः हाम्रो मिर्चिया अस्पतालमा यो नगरवासी मिर्चिया अस्पतालद्वारा नगरवासीहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनमा नगरपालिका चाहिँ क्रमशः अगाडि बढिरहेछ। खास चुनौती चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग यो दक्ष मेन पावरको अभाव छ र चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ खास मेन समस्या अहिले त्यही छ। जस्तो हाम्रो अहिले अस्पतालमा चाहिँ डक्टरहरूको अभाव चाहिँ फर्किरहेको छ। हामीले चाहिँ मन्त्रालयबाट विभागबाट चाहिँ डक्टरहरूको लागि हामी अनुरोध गरेका छौँ र मेन समस्या त्यो छ। अरू पनि अब स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पनि अलिकति हामी स्तरोन्नति हामी गर्दैछौँ। त्यसको चाहिँ
भौतिक अथवा स्वास्थ्यमा सुधार त्यो के अरे पूर्वाधार सुधारको लागि हामीले केही चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति चुनौतीको रूपमा त्यसलाई सुधार चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले त्यस्तो महसुस गरेका छौँ र हाम्रा हरेक स्वास्थ्य केन्द्र चुस्त दुरुस्त सफा र चाहिँ त्यहाँबाट दिने सेवा चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रभावकारी होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ र प्रभावकारी सेवा को विस्तारको सन्दर्भमा जस्तो के त भन्दाखेरि चाहिँ यो बजेटको पनि समस्या हुन्छ र चाहिँ के त भन्दाखेरि उपयुक्त मेन पावरको पनि समस्या छ। यिनै समस्याहरू छन् खास गरेर। अब चाहिँ विगत जस्तै निरन्तरतै नै छ, त्यही पनि अब जस्तो खास जस्तो अब स्वास्थ्यमा चाहिँ हामीले जुन सुरु गरेको सेवालाई निरन्तर दिँदैन। अब अलिकति हाम्रो स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिँ एउटा यो के त भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्रमा सेन्टरको व्यवस्था गर्ने र चाहिँ यो के अरे र यो दुर्घटनाबाट अथवा मान्छे मृत्यु भयो भने त्यसको पोस्टमार्टम गर्ने सेवा होइन, त्यो सेवाको विस्तार गर्ने भन्ने हामीले चाहिँ एउटा लक्ष्य लिएका छौँ। र अर्को सँगसँगै चाहिँ अब नगरवासीका जनसमुदायहरूको स्वास्थ्यको चाहिँ सेवाको बारेमा जस्तो विभिन्न समयमा विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य अभियान के अरे क्याम्पेनहरू सञ्चालन गर्ने हामीले के त भन्दाखेरि कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। जस्तो आँखा शिविर सञ्चालन गर्ने, अनि यो के त भने महिलाहरूको चाहिँ पाठ्य सम्बन्धीको सञ्चालन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि स्वास्थ्य सम्बन्धीको चाहिँ क्याम्पेन सञ्चालन गर्ने, यस्ता कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ। मिर्चया नगरपालिकामा ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने, मिर्चया नगरपालिकामा ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने, विभिन्न स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्ने, सामुदायिक विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याउने। अर्को चाहिँ हामीले यो स्वास्थ्यमा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम चाहिँ हामीले देखि सञ्चालन गरेका छौँ र त्यसले त्यति प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छैन। यसले प्रभावित रूपमा लाने हामीले योजना राखेका छौँ र यसको अर्थ चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाहरूको महिनामा एकपल्ट चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रबाट हाम्रा विशेषज्ञहरू गएर बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी परीक्षण गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने, उनीहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धीको चाहिँ के त भन्दाखेरि ज्ञानहरू दिने, चेतनामूलक जानकारी प्रदान गर्ने भन्ने कार्यक्रम हामीले को सालदेखि राखेका छौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम भनेर त्यसले पनि हामी निरन्तरता दिँदैछौँ र यो सालदेखि त गभर्मेन्टले पनि त्यही कार्यक्रम राखेको छ। यसले हामी सहज पुर्याएको छ त्यसले। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अपग्रेड भएर मिर्चया अस्पतालमा परिणत भएको र बिस्तारै कन्सल्टेन्टहरू पनि राख्दै जाने र यसमा अहिले गर्भवती महिलाहरूको लागि अपरेसन सेवा पनि सुरुवात भइसकेको छ। अस्पतालकै मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सुशीला सिंह। डॉक्टर सुशीला सिंह, नेशनल मिर्चया अस्पताल। एठाउँ पहिले प्राथमिक उपचार केन्द्र छ, ओहिठाउँ अपग्रेड मतलब अस्पताल बोले बिस्तारै कन्सल्टेन्ट सबके राखल जेतै। अखन तक महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञहरूले ऑपरेशन सुविधा डिलीवरी पहिले होते समय बच्चा सबके डिलीवरी होते से होते थप में अखन सेवा सुविधा में ऑपरेशन द्वारा बच्चा सबके जटिल मोडल ऑपरेशन नहीं बोले तक सबके ऑपरेशन करके सुविधा से थप अपन अस्पताल में। बाद में के ओपीडी होते यानी कि प्रसूति के सब कुछ देखे से ओपीडी सेवा मिले। बाद में कि वीडियो एक्सरे भी बढ़िया वीडियो एक्सरे मशीन बढ़िया है और वीडियो एक्सरे गर्भवती सबके भी मुझे और जनरल भी और डॉक्टर से MD डॉक्टर सब शुरू आएंगे और बाद में और थप सब शुरू होते। अपन तत्काल महिला सबके गर्भवती सबके वीडियो एक्सरे सेवा हम अपने बढ़ से ऑपरेशन सेवा मिले, लैब सब से इमरजेंसी सेवा सब लगभग 15-20 आदमी है जेना कि अब एल नॉर्मल में मिले बेसिक ऑपरेशन भेल में पानी जना पर्याप्त मात्रा में नहीं भऽ कम हो गए बच्चा के लिए दिक्कत होते एहन के भेल है। जेना कि अब अहाँ के महिला सबके समय से पहले
पानी विशेष कर गिर लगे है और बाद में पानी सूख जाए तेहन भेले और बाद में जना मदर सब कमजोर हो गए जरा यहाँ के बच्चा जन्म के पेन और भेले बेसी भेले बल नहीं कर सकले फोर्ट नहीं भेले बच्चा नहीं निकाल सकले पेन सब बेसी प्रीवियस ईयर्स हो बड़े से लेकिन अखन तत्काल एठम ब्लड बैंक के सुविधा नहीं मिला कर हम सब उनके सबके बाकी के जते हम आज तक जत के लिए हमार संस्था प्रति हमारे यहाँ धारणा है जो कोनो पेशेंट गरीबी आते सरकारी अस्पताल में ओकरा सेवा सुविधा दिए पड़ते द्वारा कि गरीब होते तो ओकरा हम बाहर रेफर करबे तो हम एठम पसीना पेशेंट है तो ओकरा सबके लेल एठम खुलल है हम जब तक जहाँ भी रहबे ना हम ओइ पेशेंट सबके लेल वही ठम जेठम छिए सरकारी अस्पताल में वही ठम सेवा करके हम करबे हम रेफर प्राय करके एहन जटिल हो जते जेहन रहते जे ओकरा जेना ICU चाहिए NICU चाहिए बच्चा के अपना NICU में वहाँ केस सबके मात्रे रेफर करबे बाकी के जतेक हो वाला से हमरा समस्या अस्पतालमा अब सेवा लिने सेवाग्राहीहरू दिनहुँ चाप बढ्दै गइरहेको र सेवा प्रति सन्तुष्ट प्राप्त गरिरहेको अवस्था छन्। यो तपाईको स्क्यान यसै गरेपछि क्यासेटमा राखेपछि त स्क्यान गरेपछि यहाँ चाहिँ कम्प्युटरमा इमेज देखाउँछ त्यसपछि हामीले चाहिँ मिलाएर इमेज मिलाएर प्रिन्ट हालेपछि यसमा चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ यो चाहिँ प्रिन्टर हो यो चाहिँ ब्याकअपको लागि युकेस हो बत्ती गएको बेला नि युकेस हो अनि यो चाहिँ तपाईँको क्यासेट हो यहाँ ल्याब लगायत विभिन्न उपकरणहरू गुणस्तरीय रहेको बताउनुहुन्छ फेरि पनि डाक्टर सुशीला सिंह। विशेषतः पहले कुछ नहीं हुई इसलिए देखिए अपेक्षा में ऑपरेशन हो लगे वीडियो एक्सरे हो लगे रेफर केस बाहर हो इसलिए बेसी तेरा सकते हम प्राय सबके काउंसलिंग करे सब सुविधा है तो उन सब बाहर जे जंचो इसलिए सब एठम खुशी हो रहे फीडबैक हो हमारा ठीक हो गया एक पेशेंट रहे ठीक हो जाए 10टा के कहे वही वजह सब पेशेंट सब बही रहे सेवा सुविधा से खुशी एठम जते भी सामान अपने एल रहे हमारा सामने बहुत बढ़िया मशीन आए फिलिप्स के बड़का मशीन आए बढ़िया कंपनी के बढ़िया दिखाई है तो गुणस्तरीय निमन है रिपोर्ट बढ़िया है वो बढ़िया है और में डिजिटल एक्सरे है पहले तो एक्सरे सब नहीं हो सरकारी अस्पताल में डिजिटल एक्सरे है लैब सबके उपकरण सब हमारा सबके कमी है वो सब फेंकते जा रहा है अखन तक ठीक है और जब कमी सब है जना थायराइड टेस्ट सब है उपकरण सब खत्म वाला छीन सब और जते हार्मोन टेस्ट और है प्राय जते भी और टेस्ट थप टेस्ट के रिपोर्ट के लिए सब मशीन सब आगे के क्रम बेसी तो गरीब आदमी सब हो गए लेकिन हम लिए जे आदमी हमारे सबके सुनने से जे कंसल्टेंट के सुविधा पहले तो एक मेडिकल ऑफिसर है तब स्पेशलिस्ट के खोज का हमारा सबके जो भी बाहर के पेशेंट सब चिन्हन से आसपास के बुझे महिला एक विशेषज्ञ तो सबके जानकारी होला सब बढ़िया परिवार के आदमी सब CEONC कार्यक्रम समेत अस्पतालमा लागू भएको बताउनुहुन्छ फेरि पनि डाक्टर सुशीला सिंह। यी भेले कम्प्रिहेन्सिभ इन्टेन्सिभ केयर सेवा देखाउ से एउटा CEONC को सेवा जे यी भेले जे मातृ शिशु सुरक्षा कार्यक्रम छै जे अंतर्गत की होइ छै जे पेशेंट के एठाम करबे तो ओइमे कुछो उपचार खर्च नहीं लगते ओकरा सबटा वही में दिया जते से एक गवर्नमेंट के एक पॉलिसी है जो गवर्नमेंट CEONC अंतर्गत किछ रुपया दे हॉस्पिटल के हम सब वही में जते खर्चा लगे से वही में ओतरी में सबके मिलाकर सबका काम करे चुनौती तो से अभी तो पहले BSc जनरल सभी खांसी के बुखार सब दवाई अब अस्पताल बोले तो अस्पताल में बेड थपे थे कंसल्टेंट सुविधा सब थपे थे
डॉक्टर से विशेषज्ञ डॉक्टर सबकी सुविधा से बिस्तारे बिस्तारे प्रयास करें। हम की कहै छै जे अपने सबके नजदीक में जे पहले नहीं छलै, आब अहाँके जानकारी छै तऽ आओ पहले सेवा सुविधा लियो, है ना। डिलीवरी हुए, नॉर्मल डिलीवरी हुए, प्रसूति संबंधी कोनो भी समस्या हुए, अहाँ निर्धके आओ, एक टिकट कटाकर हमरा से भेटू। हम एनी टाइम 10 बजे से 4 बजे तक पहुँचिए, भेटू। हमरा जतेक संभव हेतै सबटा उपचार हमसब करबै। सुविधा सब जेना निसंकोच अब लेडीज सबके महिला सब बात करले कनी इजी भऽ जाइ छै, ओहन सबके हमसब सब गोटाके जे भी देखबै उपचार करबै। हजुर नमस्कार, म अहिले यो जिनेस्पोर्ट मेसिन लिएर बसिरहेको छु र यहाँनिर हामीले जिनेस्पोर्ट गर्छौँ। जिनेस्पोर्टले के भन्दाखेरि टिभी क्षयरोग जुन छ नि एमडिआर टिभी छ कि छैन भनेर कन्फर्म गर्ने र पोजिटिभ छ कि छैन भनेर त्यो पनि थाहा दिन्छ। अर्को कुरा यो मेसिन भनेको निकै कस्टली, यो नेपाल गभर्मेन्टले बाट हो र यो पूर्ण निःशुल्क छ यहाँ। तर यो मेसिनको मूल्य भन्दाखेरि अहिले एराउन्ड हाम्रो यो सेटअपलाई चाहिँ लगभग 25 लाख पर्छ। यहाँ हामीले स्पुटम, जिनेस्पोर्ट र यतातिर हामी जिनेस्पोर्ट बाहेक अन्य थेरापी भन्दाखेरि माइक्रोस्कोपिक जाँच यहाँ गर्छौँ। र अर्को हाम्रो यता यहाँनिर हामी बायोकेमिकल टेस्टहरू गर्छौँ र यहाँ माइक्रोस्कोपिक टेस्ट गर्ने भनेको यता भइगयो र अरू इक्विपमेन्टहरू हाम्रो छ यहाँ। र बाहिर भन्दाखेरि बाहिरको रुममा हामी कलेक्सन गर्ने काम गर्छौँ। यहाँनिर हामी कलेक्सन गर्ने काम गर्छौँ, स्याम्पल कलेक्ट गर्छौँ। अस्पतालमा सिइओएनसी कार्यक्रम लागू भएको छ। सिइओएनसी कार्यक्रम के हो यस सम्बन्धमा बोल्दै मेन्टर सिइओएनसी डाक्टर इन्द्र प्रसाद प्रजापति। मेरो नाम चाहिँ डाक्टर इन्द्र प्रसाद प्रजापति, म चाहिँ स्टिरो विशेषज्ञ डाक्टर। सिओएनसी भनेको मै आफ्नो पद चाहिँ मेन्टर सिओएनसी, मेरो चाहिँ सिओएनसी मात्रै हेर्ने। सिओएनसी मेरो भनेको इङ्ग्लिसमा कम्प्रिहेन्सिभ इमर्जेन्सी अब्स्टेट्रिक न्युनाटल केयर भन्छ। भनेको सुत्केरी र बच्चाको लागि इमर्जेन्सीको परिमाणमा हामी तत्कालै इमर्जेन्सी 24 आवरभित्र डक्टर सुविधा सबै सुविधा राखेर यहाँ अपरेसन सञ्चालन गर्नको लागि त्यो चाहिँ त्यसको लागि पनि सिओएनसी गर्छ। यो चाहिँ म 4 वर्ष अगाडि पनि आएको थियो। त्यो बेलामा सानो हस्पिटल थियो, यो बिल्डिङ बनिरहेको थियो र यहाँको जनतालाई यहाँ पनि सिओएनसी चाहिन्छ, यो सेवा चाहिन्छ भनेर त्यो बेलामा हाम्रो उपेन्द्रजीले चाहिँ उद्घाटन गर्नुभएको छ। अहिले चाहिँ त्यो बेलामा उपराष्ट्रपति के हो थियो, अनि त्यही सिलसिलामा म आएको थिएँ। अनि त्यो बेलामा मैले चाहिँ सपना पनि देखेँ र यहाँको जनताहरू जुन चाहिँ मिलन साहब, त्यसमध्ये पनि यो चाहिँ मेयर साहबले यो फागुन 30 गते सुरु गर्नको अगाडि मलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ परिवार कल्याण महाशाखालाई उहाँले चाहिँ सिओएनसी सञ्चालन गर्नलाई टेक्निकल एसिस्टेन्ट पठाइदिनु भनेर म आएको थिएँ। अवस्था र धेरै राम्रो छ। अरू चाहिँ पालिका लेभल हेर्दाखेरि यो पालिकामा चाहिँ राम्रो छ। हालसम्म हाम्रो यो यस्तो सिओएनसी चाहिँ एउटा पालिका लेभलको हो नि। 22 ठाउँमा नेपाल राज्यमा 753 पालिकामा 22वटा पालिकामा सिओएनसी सर्भिस छ, जसमध्ये चाहिँ हाम्रो 20वटा पालिका नेपाल सरकारले पैसा दिएको छ। तर पालिका लोकल गभर्मेन्ट भनेको पालिकाहरूले 2 ठाउँमा चलाएको छ, त्यो चाहिँ मिर्चिया र मेलिन्ची आफ्नै पैसाबाट स्टोरबाट चलाएको। हामीले एक्चुअली त पैसा पठाउनु पर्ने, त उहाँहरूको जनमानस सबैको तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँको मिडियाहरू यहाँ सिओएनसी चलाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि बिचमा नेपाल सरकारले पैसा दिँदैन, मैले श्रावणदेखि दिन्छ, बिचमा कसरी ल्याउने भन्दाखेरि म दिन्छु। यहाँको मेयर साहब उपमेयर साहबले हामी पैसा राख्छु,
यो प्रोग्राम चलाइदिनु पऱ्यो। यहाँको जनताहरू धेरै मरेछ, रिफर गर्नु पऱ्यो होइन। रिफर गर्दाखेरि धेरै पैसा लाग्छ, यहाँ गऱ्यो भने सबै फ्री। च्यालेन्ज जेमा पनि च्यालेन्ज हुन्छ नि होइन। सबै अब गर्दा गरी त तपाईँहरूको चाहिँ मदतले यति च्यालेन्जिङ हुँदै त सिओएनसी सञ्चालन गरेर च्यालेन्जिङमा त जनशक्तिको च्यालेन्ज चाहिन्छ, त्यहाँको बजेट चाहिन्छ, लाइन चाहिन्छ, एम्बुलेन्स चाहिन्छ, ब्लडहरू सुविधा हुनु पऱ्यो। च्यालेन्जमा जहाँ पनि च्यालेन्जलाई हामी चाहिँ सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ। यहाँ अहिलेसम्म 11 जना भइसक्यो। पहिले सबै रिफर हुन्थ्यो नि, यो 11 जना नभयो भने सबै रिफर हुन्थ्यो। कमसेकम रिफर त 11 जना अपरेसन सफल अपरेसन भएको छ। अहिले पनि 1 जना हिजो मात्रै अपरेसन गरेछ, तपाईँ लिन सकिन्छ। तपाईँहरू यहाँको जनमानस दिदीबहिनीले म अनुरोध के गर्न त तपाईँहरू कहीँ जानु परेन, यहाँको आउनुहोस्। डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, सुशीला डाक्टर साहब पहिले लाहानमा राखेको हामीले नि यही सिओएनसी प्रोग्राममा राखेको, हाम्रो कन्ट्र्याक्ट सक्यो उहाँको, अनि उहाँले नि हामी लिएर राख्यो। राम्रो छ। अहिले चाहिँ पहिले अस्ति आउँदाखेरि जुन चाहिँ अहिले त ड्रास्टिक चिज हामीले कल्पना पनि गरेनौँ। हामी त्यो बेलामा सिओएनसी यदि चलाउने हो भने यो गर्नुपर्छ भने लिस्टेड गराएको थिएँ, सबै ठोक रहेछ के, सबै गऱ्यो नि, सबै गरेर सञ्चालन पनि गऱ्यो, उद्घाटन गऱ्यो। ठिक छ, उद्घाटन गरेर हामीले पनि बोलाएको थियो। म चाहिँ अरू जिल्लामा पनि जानुपर्छ। हाम्रो चाहिँ 105वटा साइटमा यो पालिका लेभलमा 105वटा चलिरहेछ। त्यस कारण यो मेरो सुपरभिजन अहिले 105मा सबै ठाउँमा निरीक्षण गर्छु। भोलि म सिराहा जाँदैछु, पर्सि चाहिँ लाहान जाँदैछु, हिजो जलेश्वर त्यहाँको बस्ती के छ होइन, निरीक्षण गरेर सल्लाह गर्ने। तिनीहरूलाई ट्रेनिङ गर्नु पऱ्यो कि नेपाल सरकारले नदियो भने नेपाल सरकारले पैसा हामी राखिदिन्छ। अब आउनेमा हामी चाहिँ यो पैसा हामी राखिदिएछौँ। कति पैसा आउँछ पनि त्यो थाहा छैन। अहिले बजेट भएको छ नि चाहिँ ओके भएको छैन होइन। नआएको खण्डमा आज मेयरलाई मैले चाहिँ भने यो आगामी वर्षमा माथिबाट पैसा नआएमा तपाईँले राखिदिनु पऱ्यो। दिदी बहिनी बचाउने तपाईँको कर्तव्य हो भनेर। धन्यवाद। यो के आकाश गङ्गालाई पनि धन्यवाद दिएँ, किनभने यो न्युज सबैले यहाँको दिदीबहिनीले सुन्यो भने यहाँ आउँछ। जति सेवा लियो त्यति नै प्रोग्रेस राम्रो हुन्छ, उल्टी प्रगति गर्दै। तपाईँहरूले पनि यो आकाश गङ्गा सबै स्टाफलाई म धन्यवाद दिन्छु।